नमस्ते, मैं हूँ सृष्टि और स्वागत है आपका मेरे चैनल रंग बाय सृष्टि में। आज के वीडियो में मैं 10 डिफरेंट तरह के मधुबनी बॉर्डर्स के हेल्प से एक पेंटिंग बनाऊंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है rang.by.srishti। तो अब हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल रंग बाय सृष्टि को सब्सक्राइब करें। मैंने एक 15 बाय 20 सेंटीमीटर का हैंडमेड पेपर लिया है। पहले इस पर पेंसिल से एक रफ आउटलाइन बना लेंगे। पेपर के एक साइड में फिश का आउटलाइन बना रही हूँ। बाकी के पेपर पर मैं 2 सेंटीमीटर का गैप लेते हुए स्केल से 9 लाइंस ड्रॉ करूंगी। अब व्हाइट और ब्लू एक्रिलिक कलर के इक्वल पार्ट्स लेकर उसे मिक्स करेंगे और लाइट ब्लू कलर बनाकर फिश के आउटर पार्ट्स पर कलर कर लेंगे। पेंसिल किए हुए लाइंस पर व्हाइट एक्रिलिक कलर से डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइंस के अंदर बॉर्डर बनाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप 10 मधुबनी बॉर्डर्स बना रही हूँ। ये बॉर्डर्स आप किसी भी मधुबनी पेंटिंग में बना सकते हैं।
ये 10 सिंपल बॉर्डर्स के डिज़ाइन हैं जो हम इजीली बना सकते हैं। फिश पर येलो एक्रेलिक कलर करेंगे। ब्लैक कलर से फिश के अंदर का डिज़ाइन बनाकर पेंटिंग को कंप्लीट कर लेंगे।
हमारा मधुबनी बॉर्डर्स का पेंटिंग बनकर रेडी है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।